Today the Department of English has organized a seminar on luck factor. Most of our students, they are hailing from different areas, from different factions, from different faiths, and they are confused what to do with the luck. For that purpose, Dr. Muhammad Babar has presented a seminar before us, and in that he has highlighted different factors which are related to opportunities, which are related to hard work, which are related to ambience, which are related to mindset. All these factors combined together makes a student excel in one's career, in one's future. So I wish them all the best in their future endeavors. Assalamu alaikum. My name is Saliha Bilal and I am from English department. So today I took a workshop of element of luck. So basically I experienced the things that how a person can be lucky or how a person can experience the luck in his life by taking a small steps or experiencing the different point of views from surroundings and to do hard work. आज मैंने किस्मत और बदकिस्मत के बारे में जाना कि हम किस तरह किसी की फलाह बहबूद कर सकते हैं, किस तरह किसकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर कोई भी आप काम करते हो उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप जब तक नहीं होगा आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह में किसी भी काम के पीछे अगर जाना है, किसी की हमें मदद करनी चाहिए तो ना कि हम इसमें अपना मकसद देखें, हम ये देखें कि हमारी वजह से किसी दूसरे बंदे का क्या फ़ायदा हो रहा है। हमें अपने नहीं बल्कि दूसरों के लिए, उनकी खिदमत के लिए जो है हमें काम करना चाहिए।